Hello guys, I Vishal welcome you all to the channel EasyBro. Today we will have an overview of the principle of programming language. But वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उन सभी के लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आज के कुछ टॉपिक्स जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेक्ट्रम, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड प्री प्रोसेसर और भी बहुत कुछ। लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ लिखा तो गया है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड अकम्प्लिश एनी टास्क। बट इसे हम हिंदी में समझते हैं, एक प्रोग्रामर जो इंस्ट्रक्शंस देता है अपने कोई भी टास्क पूरे करवाने के लिए कंप्यूटर से, उस इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे टास्क कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर का एडिशन कराना हो या कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो या एक कोई प्रोग्राम रन करवाना हो। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट, मशीन लेवल, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीधा CPU एग्जीक्यूट कर देती है। इस मशीन कोड में बेसिकली ज़ीरोज़ और वंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। आप एग्जांपल देख ही सकते हैं। सेकेंड, असेंबली लेवल, ये भी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल होती है, जिससे प्रोग्रामर को हेल्प होता है आसानी से कोई भी प्रोग्राम समझने में या लिखने में। आप एग्जांपल देख ही सकते होंगे, ये एक असेंबली लेवल प्रोग्राम का एक एग्जांपल है, इसमें हम 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाती है, जिससे प्रोग्राम समझने में और डिबग करने में आसानी होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C, C++ एंड जावा आर इंक्लूडेड इन दिस हाई लेवल लैंग्वेज। Moving towards next question, why there is so many programming languages? First, special purpose, हर different programming language different features सर्व करती है। जैसे कि C प्रोग्राम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे ज़्यादातर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं जावा, जो कि अपने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर की वजह से वाइडली यूज़ की जाती है। सेकेंड, पर्सनल प्रेफरेंस, अब ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहता है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा और इजी टू यूज़ फीचर्स प्रोवाइड करती है। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सक्सेसफुल बनाती है। फर्स्ट, एक्सप्रेसिव पावर, जैसे हमने डिस्कस किया, पावरफुल फीचर्स। सेकेंड, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जावा, सिंपल एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। थर्ड, एक्सेलेंट कंपाइलर, टू जनरेट वेरी फास्ट कोड। अब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर जल्दी कोड कंपाइल करेगा, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोग ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेक्ट्रम। बेसिकली इट refers to the range of programming language available in the market, in which we have 3 different languages. First, procedural language. It is a way of writing program where you have a set of instructions that are executed in a sequence, one after another. C is the best example of this procedural language. Next, we have object-oriented programming. It is a computer programming model that organizes software design around data or objects rather than function and logic. Java is the best example of object-oriented programming. And in last, we have scripting language. It is a type of programming language that is typically interpreted rather than compiled. Scripts are executed by an interpreter line by line. Python is the best example of scripting language. Then we have 2 more languages. First, declarative language and imperative language. In declarative language, focus is on what the computer should do. Best example of declarative language is SQL, where we just have to write query that we want and it is done. Second, imperative language, in which focus is on how the computer should do. Best example of imperative language is Python, where we have to build logic and code how computer should perform. Now, let's see the difference between compiler and interpreter. Both compiler and interpreter converts high-level language to low-level language and vice versa. But compiler takes entire program at a time as an input, whereas interpreter takes single line of code at a time. In compiler, there is generation of intermediate object code, so memory requirement is more, but in interpreter, there is no intermediate object code generated, so memory requirement is less. Compiler displays all error after compilation, all at the same time, but interpreter displays error of each line of code one by one. This makes error detection easier in interpreter and difficult in compiler. The compilation is done before execution in compiler. This makes speed comparatively faster. In interpreter, compiler and execution takes place at same time. This makes interpreter speed faster. So here are some programming language
that uses compiler that is C, C++, C Sharp and many more. And this all are the programming languages which uses interpreter like Python, Ruby, PHP and many more. Let's move forward with the question programming language environment, in which we have two things. First, integrated development environment, that is IDE, and command line. IDE is a software that provides centralized environment for software development. It provides graphical user interface with menu, button and window. And it also includes a code editor, debugger or a compiler for project development. Softwares like Visual Studio Code, IntelliJ, PyChamps are some famous name of this IDE. Now, command line, also known as terminal or shell. It provides a text-based interface to interact with computer operating system. It includes a command prompt and a various command line utilities to perform tasks. Linux and Unix-based system are example of command line. Now, next question. What is bootstrapping? As you all can see, using a minimal or simple version of a programming language to develop or compile more complex version of that language. Means किसी भी programming language का simple version use करके उसे complex version में develop करना is known as bootstrapping. Here are two circumstances where bootstrapping is necessary. P-code, that is pseudocode version of the compiler, can be significantly smaller than the machine language. This could helpful for saving memory and disk space. Second, they can run faster even more than that of P-code version of interpreter. Moving forward, what is JIT or just-in-time compiler? Just-in-time compiler is an essential part of Java runtime environment that is responsible for performance optimization of Java-based application during runtime. This is achieved by compiling bytecode to native machine code at a runtime. And let's end this lecture with the question difference between compiler and preprocessor. Compiler क्या होता है हम ये पहले ही देख चुके हैं. So अब preprocessor का working देखते हैं. Preprocessor removes comments, white spaces from the program and group characters together into tokens such as keyword, identifiers and symbols. And it mainly identify higher level structures such as loops. This is all from my side. Thank you for joining us. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button for more exciting content. Your support means the world to us. If you have any questions or suggestions for future videos, leave them in the comment section down below. We love hearing from you.